Good morning. I'm starting now. Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yesterday we have seen the sign conventions. All the distances, all the positions will be starting. All the positions will be started, will be measured from pole. And also, if we move in the direction of incident rays, they will be positive. Against the incident rays will be negative. In other words, space in front of the mirror will be negative and behind the mirror will be positive. Therefore, sign convention for F, focal length पॉजिटिव होगी किसकी और किसकी नेगेटिव. कॉनकेव मिरर में ऐसा रहता है ना, फोकल लेंथ फोकल पॉइंट सामने आता है, इंसिडेंट के रेस के अगेंस्ट में आता तो माइनस, एंड कॉन्वेक्स में बिहाइंड, लाइक दिस, फोकल पॉइंट इज बिहाइंड द मिरर, इसीलिए पॉजिटिव ऑलवेज. कॉनकेव में माइनस एंड कॉन्वेक्स में प्लस. All right. Clear? Can you see it? तो इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, because we are in this we are traveling in the direction of incident rays. So it will be, they will be fixed, they will be independent of position of object and nature of object, real or virtual. F will always be fixed. These concave की minus, convex की plus. Clear? इसमें कोई चेंज नहीं होगा. अगर ऑब्जेक्ट का नेचर चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, इमेज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी. नाउ साइन कन्वेंशन फॉर ऑब्जेक्ट. If u is the position of object position, then for real object u will be negative, because real object हमेशा मिरर के सामने रहेगा. You have to move against the incident rays, it will be negative. Virtual object, I told you, it will be just made by converging rays. तो ऐसे मिरर हमने ऐसे रख देंगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो that will be positive. Virtual object will be positive as it will be behind the mirror. Virtual object जो है ना converging rays से बनेगा behind the mirror. Getting this? So virtual object, there is one question in NCERT book of virtual object. In that you have to take u positive and otherwise u is negative. U is always negative except in one case, because most of the time real objects are there. Object is kept at so and so distance, means this kept means it has to be real object. ठीक है, तो U जनरली नेगेटिव रहता है, बट एक केस में पॉजिटिव रहेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. V is the image position which is calculated by the mirror formula. तो V जो है image position, we can use the mirror formula to calculate it, or sometimes V will be given, any two parameter will be given, third will be, you will be asked to determine third one. Okay. So we'll see mirror formula after the rays diagram and types of the images. देखो, some standard rays, कुछ rays जो हैं जो हम यूज करेंगे इमेज बनाने में. For example, parallel rays. In case of concave, they will be reflected through the focal point. ठीक है, पैरेलल रेज हमेशा
reflect होने के बाद they will be passing, they will be reflected and will be passing through the focal point. If rays are in, if parallel rays are there, but they are coming at some angle, then they will be intersecting in the focal plane. तो यहाँ पे focal point है, उसके plane में intersect करेंगे. We call it focal plane. Infinite parallel rays are coming from infinite. All the rays are parallel. ठीक है. So all parallel rays will be coming from infinite and will be passing through the focal point after reflection. ठीक है. तो ये parallel. Are you there? तो लो whole line पर. Yeah. Yes, sir. Okay. What about this ray? They all are following the law of reflection. यहाँ पे देखो normal ऐसे normal के साथ same angle बना के reflect होंगे यहाँ पे. So all are following the law of reflection. यहाँ पे center of curvature यहाँ कहीं पर होगा. This angle will be equal to this. Similarly, incident ray at the pole will go symmetrically after reflection, making equal angles. Okay. Ray coming from the focal point will become parallel. जैसे देखो ये रे है, इसको आप वापस भेज जैसे मिरर रख दे, प्लेन मिरर. Coming from focal point will become parallel. रिवर्सिबिलिटी बोल सकते हैं इसको. रे अगर ऐसे आ रही, देखो फोकल पॉइंट से आ रही है, पैरेलल हो जाएगी. और अगर इसको हमने वापस भेज दिया सामने मिरर रख के, तो ये पैरेलल रे विल pass through the focal point. If you keep the mirror perpendicular to the reflected ray, they will go back to the path from where they are coming. है ना. अगर उनको वापस भेज सकते हैं प्लेन मिरर से, तो रिट्रेस करती पाथ, प्रोवाइडेड प्लेन मिरर इज परपेंडिकुलर. ऐसे रख दो तो रिट्रेस हो जाएंगी. तो फोकल पॉइंट से जो रे आ रही है, it will become parallel after the reflection following the law of reflection. और center of curvature से it will be retracing its path. Why? Because it is coming along the normal. Normal भी इधर ही होगा. Center of curvature से आता है normal. Normal के along कोई ray आती है, I will be 0, R will be 0. It will retrace its own path if it is happen to come from the center of curvature. Okay, because normal will be along that line only, that way only. Convex में क्या होगा? Parallel ray will be reflected in such a way that it will appear to come from the focal point, following the law of reflection. यहाँ पे normal कुछ ऐसे आएगा. This much angle, this angle will be, both angle will be equal. Okay. And ray incident at pole will be going symmetrically following the law of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. And ray which was coming toward the focal point, incident toward the focal point, will become parallel after the reflection. Reversibility principle. Ray which was heading towards the center of curvature will be bouncing back along the same path because I is 0, therefore R is 0. ठीक है, तो ये रेज हम यूज करने वाले हैं. At least one will be parallel, other will be from the pole. At least first two rays we are going to use. Parallel wali and passing through the pole, incident at the pole. These two. There will be infinite number of rays coming from the object. But for simplicity, we will take the two rays only. Third will be a principal axis. So we'll make the diagram with two rays only. Okay, now we see image formation.
by the concave mirrors. ठीक, ये सेम टॉपिक है जो आपने 10th में पढ़े, सेम रे डायग्राम. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी. If object is at infinity, rays will be intersecting at focal point and it will be point and real image. Point real image at focal point. Point image बन जाएगी. Object बहुत दूर है, तो rays will come parallel to the principal axis like sun. If you keep the concave mirror perpendicular to the sun rays, you will find the image forming at focal point. Point image, real image रहेगी. If you put the paper here and keep the paper here, you can see the bright spot at on the paper. क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया. ये इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो पॉइंट इमेज मिलती है कहाँ पर? फोकल पॉइंट पर. रियल इमेज, बिकॉज रेज आर रियली कमिंग दिस साइड, सामने रियल इमेज ही बनती है. In front of the mirror, if rays are intersecting after getting reflected, will be forming the real image. Object between infinity and C. C and infinite के बीच में है. C is the center of curvature, infinite is here, in between object is kept. तो क्या होगा? ये parallel ray, ये वाली ray will be reflected along the focal point. Pole वाली ray will be symmetrically going below the principal axis, making same angle. जितने एंगल ये होते हैं, तो at this point they are intersecting. This point will be correspond image of point A, A dash लिखेंगे, और यहाँ और उसके वहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो तो B dash will get the image corresponding to its point B. तो यहाँ पर B dash आ जाएगा. Wherever you get the intersection, वहां पर inverted arrow ड्रा कर दो. That will be the image of object. A dash B dash will be the image in front of the mirror and between C and F. तो image छोटी बनेगी. देखो, image between C and F, diminished, real and inverted. Diminished means small, real and inverted. You can show it on the paper, on the screen. Clear? This everything you have done in the previous classes. Third case, if we bring the object further close to the mirror at point C, यहाँ पे लेके आएंगे तो उसके नीचे इमेज बन जाएगी. Series. Object at C, so intersection of rays will be here itself, inverted image of same size in front of the mirror, real image. Image same size, same place, real and inverted. ठीक है, so this is the next case. And if object is between C and F, और आगे लेके गए शिफ्ट, इसको और आगे शिफ्ट किया, image will move backward and will be bigger. C and F के बीच में रखा, parallel rays reflected through the mirror will be passing through focal point and extended further. Another ray symmetrically reflected. Both are intersecting here at point A dash. वहां से arrow inverted arrow आ जाएगा. B dash, A dash, B dash will be bigger image now. Bigger भी है, inverted भी है, real भी है. Image is enlarged, real and inverted. How enlarged है? When the object is between C and F. Got it? Yes, Now, sir. moving the object further to the focal point. Focal point पे ले आएंगे, दोनों rays parallel हो जाएंगे. You see here, ये
और पोल से जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है गोइंग टू इन्फिनिटी, तो इमेज विल बी हाईली एनलार्ज, रियल, इन्वर्टेड एंड एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने. इन ऑल द केसेस मिरर इमेजेस वर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर ओनली, बट धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता जा रहा है इमेज का. फाइनली when you are reaching to the focal point, image is reaching to the infinity. Now further moving the image, I mean further moving the object toward the pole, और आगे शिफ्ट करेंगे. देखो यहाँ पे ले आए between pole and F. तो देखो ये वाली रे तो पोल से चली गई ऐसे, I mean फोकल पॉइंट से चली गई पैरेलल रे, पोल वाली सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो गई. अभी इधर तो डाइवर्ज हो रही है, they are not going to intersect this side now. What we have to do is move them backward. यहाँ पे intersection हो रहा है. Now image is erect, enlarged and behind the mirror. या object focal point के अंदर होता है, I mean between focal point and pole. Image is behind the mirror and enlarged and virtual. Enlarged, virtual, erect, behind the mirror. These are the 6 positions in case of concave mirror. ठीक है, 6 positions इनको हमने एक साथ दिखाया. चलो what I have done it in one mirror itself I have shown. देखो out of 6 only 4 I have shown. Infinite वाली छोड़ दी, infinite वाली object infinite पे है, focal point पे image बनने से that I have left. Now object is beyond C, यहाँ पर है, उसकी corresponding image C and F के बीच में आई. मैंने अब सेम कलर से मैंने दिखाई, देखो 1 की इमेज यहाँ है. When object is at C, सेम पोजीशन पे सेम साइज की इन्वर्टेड इमेज, ऑब्जेक्ट को और आगे शिफ्ट किया 3, थर्ड पोजीशन है ये बिटवीन C and F. इमेज हैज बिकम बिगर, फोकल पॉइंट पे थी तो इमेज एट इंफिनिटी एंड बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल हियर अगेन बिगर इमेज बिहाइंड द मिरर एंड इरेक्ट. इसकी इमेज ये है, इसकी ये है, सी पर है तो वहीं पर है, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन, इसमें छोटी है. देखो 2 केसेस में छोटी इमेज है. जब ऑब्जेक्ट सी बियॉन्ड सी पर है और इनफाइनाइट पे है तो छोटी इमेज है. जब सी पर है सेम साइज की इमेज है और उसके बाद सी के अंदर है, I mean सी एंड एफ के बीच में है तो बड़ी इमेज है. एफ पर है तभी भी बड़ी इमेज है. और ये फोर्थ पोजीशन I mean बिटवीन पोल एंड एफ है तभी बड़ी इमेज है. सी से दूर है तो इमेज छोटी है और सी के अंदर है तो इमेज बड़ी है. All right. Object is at C, size of image is same. Beyond C, diminished image. Within C, bigger image. Clear? Yes, sir. Okay. So what about in the other mirror? Other mirror may only 2 situations or only one situation we can say. एक तो फोकल पॉइंट वाली है, उस पे तो नहीं, I mean एक तो इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकल पॉइंट में बनेगी, पॉइंट इमेज. Otherwise, in rest of the cases, it will be between pole and focal point. तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको. Point if object is at infinity,
रेज पैरेलल आएंगी, और सभी इधर एक्सटेंड करने के बाद इधर से डाइवर्ज हो रही है, they will be intersecting at the point called focal point and point image. तो वर्चुअल है, अभी देखो बिहाइंड द मिरर ही बन रही है, वर्चुअल होंगी, पॉइंट इमेज ऑन एफ, वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे बनी इनफाइनाइट पे जब होती है तो इमेज फोकल पॉइंट पे बनती है, इन बोथ द केसेस वी कैन सी। एंड सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी, पोल एंड इंफिनिटी, पोल से लेकर इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी है। तो सपोज वी आर टेकिंग हियर, तो रेज ये तो ऐसे चली जाएगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट, एंड अदर रेज सिमेट्रिकली आ जाएगी। तो दिस टू रेज आर डाइवर्जिंग आउट, तो इसको इधर तो इमेज मिलेगी नहीं हमें, इसको अंदर इधर बिहाइंड द मिरर विल जस्ट एक्सटेंड, इट इज इंटरसेक्टिंग हियर। तो छोटी इमेज, इरेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर और विद इन द फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट के अंदर है, देखो फोकल पॉइंट यह है, उसके अंदर ही है, आई मीन बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। इसमें कहीं पर भी रहने दो, फोकल पॉइंट से बाहर नहीं निकल रही इमेज, इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द फोकल पॉइंट इन केस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। इसमें हमें v की वैल्यू पता लग जाती है, जो फोकल लेंथ होती है, इमेज पोजीशन जो है उससे कम आती है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। देखो v इज पॉजिटिव हियर, इस केस में देखो इसमें भी पॉजिटिव होगी। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखता हूँ। क्या रिजल्ट है इसमें? v is positive and less than or equal to f in magnitude, less than or equal to f in magnitude for real objects. Getting this point, तो आपको आइडिया लग जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ही, जितनी फोकल लेंथ होगी उससे कम ही v की वैल्यू आएगी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो फोकल लेंथ इमेज f पर बनेगी, अदरवाइज इट विल बी लेस देन f। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया आपको कॉन्वेक्स मिरर के? अरे देर तुम लोग हो लाइन पर? Yes, Yes. sir. ओके, तो we can, after knowing these results, numericals become easy। क्यों हमने पढ़ा ये सब ऑलरेडी आपको पता भी थे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स गिवन टेक्स्ट बुक में डायग्राम सब दिए हैं। तो इसमें हमें रिजल्ट पता लग जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग से पहले ही आइडिया लग जाता है कि अपना आंसर क्या आएगा। ठीक है, ओके। तो मिरर फार्मूला हमें इमेज पोजीशन निकालने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन दिए तो ऑब्जेक्ट निकालने, ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड सो ऑन, है ना। इमेजेस जो है किस पोजीशन पे इमेज बनेगी पर्टिकुलरली, तो देखते हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगेन वी आर टेकिंग टू रेज ओनली। ये वाली रेज जो है पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट से जाएगी, और ये वाली सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें
मिरर फॉर्मूले में देखो u यहाँ पर है, ए बी इज ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन u रहेगी, साइन कन्वेंशन से पुट करेंगे हम, माइनस है ना, v इमेज पोजीशन यहाँ पर रहेगी, ये v, p b डैश इज v, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे यहाँ भी, pf यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस pf इज f, ए बी इज ऑब्जेक्ट ये वाला, a dash b dash is its image. Now we'll see similar triangle use करके हम इनका तीनों का रिलेशन निकालने जा रहे हैं, a dash b dash f ये वाला, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल MPF, F बीच में लिखा है यहाँ पर देखो करने से, F is written here. कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो तुम देखो ये 90 डिग्री रहेगा, इसमें ये भी 90 रहेगा। देखो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इट विल बी वेरी क्लोज टू P, वेरी क्लोज टू पॉइंट P है, ठीक है, बिकॉज स्मॉल अपर्चर, ये भी 90 आएगा और ये अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना, तो रेशियो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, फिर ए डैश बी डैश डिवाइड बाई MP ये वाला इज इक्वल टू FB डैश ये वाली साइड इज इक्वल टू FP, उनका रेशियो इक्वल होगा ना वर्टिकल साइड्स का हॉरिजॉन्टल का। FB डैश को क्या लिख सकते हैं, FB डैश को हम, क्योंकि डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करनी है, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, तो PB डैश माइनस PF, ये डिस्टेंस माइनस कर दी, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी कमिंग फ्रॉम पोल ओनली, और ये तो ऑलरेडी PF तो पोल से है ही डिस्टेंस, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा ट्राइंगल पोल से सिमेट्रिक ट्राइंगल बनेंगे, ये दिस वन एंड दिस वन, तो ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 है, ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना, तो रेशियो साइड्स की रेशियो भी इक्वल होंगी, कौन से ये A dash B dash upon AB will be equal to ये वाली डिस्टेंस PB dash upon PB, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। बट यहाँ पर देखो ये जो MP है, it will be equal to AB, MP will be equal to AB, ठीक है, therefore 1 and 2 की लेफ्ट साइड सेम हो गई, तो राइट साइड इक्वेट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर इसमें ये वैल्यू पुट कर दो इधर, इट विल बी PB डैश अपॉन PB, राइट साइड की ये वैल्यू इसके साथ इक्वेट कर दो, ऐसे कर लो जाता, ठीक है, तो PB डैश इज नथिंग बट ए माइनस B, इमेज पोजीशन है, और PB इज ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये वाली माइनस U हो जाएगी, और राइट साइड में देखो ये दिस इज अगेन माइनस B, और PF इज माइनस F, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, और नीचे माइनस F, ठीक है, तो अभी साइन कन्वेंशन के साथ सिंबल्स पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और साइड चेंज की और सभी प्लस हो गए साइड चेंज करने से, इसको इधर ले आए और इसको इधर भेज दिया, ठीक है, और UVF से तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर F बचेगा, यहाँ पर U बचेगा और लास्ट में V बचेगा, तो इट विल बी 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, और F को R/2 लिख सकते हैं,
2 पर आ जाएगा. That's how this derivation can be done if it is asked. ठीक है. You can see it full. Similarity of triangle लेके करना है. और कौन कौन से ट्रायंगल से, एक तो P के साथ पोल के साथ है और दूसरा F के साथ ट्रायंगल बनना है इमेज एंड ऑब्जेक्ट के. One is with the pole, other is with the F focal point for images and objects. ठीक है. If they are asking you with the convex mirror का डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर आपको. Sir, Yeah. in that third last step, won't we cancel the signs? And you can cancel it. ये cancel हो जाएंगे. You are asking this ना. Yes, sir. Yes, sir. So, but this will remain. माइनस F इधर आके इसके साथ माइनस VF और this will remain. यहाँ पे कैंसिल कर सकते. Okay, sir. Okay. If they are asking you for the convex mirror में भी सेम रिजल्ट आएगा. देखो उसमें ट्रायंगल जो बनेंगे C के साथ, एक तो P के साथ बने, उसमें P पोल के साथ बने थे. एक तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ये वाला और ये सिमेट्रिक आ जाएंगे. दूसरा C के साथ बनेंगे ट्रायंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ. वहां पर F के साथ बनाए थे हमने. एक ये ट्रायंगल रहेगा, एक ये ट्रायंगल रहेगा ये वाला. एक ये फुल यहाँ तक C तक और एक ये छोटा रहेगा. तो यहाँ पर भी देख लेते. जस्ट वी कैन सी इट क्विकली. ये ऑब्जेक्ट पोजीशन इज -U, इमेज पोजीशन इज -V, focal point is +F. Okay. And triangle देखो ABC ये वाला. And other one is A', B', C. Similar है तो A', B' इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो ये वाली साइड का इस फुल साइड के साथ इतनी यहाँ तक के साथ. B', C डिवाइड बाई BC. B', C तो बीच में से है, इसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, पोल से लेना पड़ेगा. PC माइनस PB'. एंड ये वाली डिस्टेंस भी दो पार्ट में देखो. इट इज PB दिस प्लस दिस. पोल से वो कर लिया. इक्वेशन 1 हो गई. दूसरा पोल के साथ सिमिलर ट्रायंगल जैसा प्रीवियस वाले में भी था. यहाँ पर ये एंगल इसके बराबर होगा, ये 90. ये भी सिमिलर है. इसमें भी रेशियो A', B' will divide by AB will be this distances PB' upon this. दोनों को इक्वेट कर दिया. लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वेट करके साइन कन्वेंशन पुट कर दिया. यहाँ पे देखो PB' is this side, that is +V. PB is this side -U. और यहाँ पर आपका आएगा PC is equal to
twice of focal point, ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पर, P B dash is V and PB is minus U, and this again PC is twice of F. Cross multiplied and divided by UVF, we get the same result as in the previous case. तो derivation देख लेना कौन सा, if they are asking you convex का करना है तो ये वाला करना पड़ेगा. If nothing is mentioned, you can do any of them. Now since same formula is there for both the mirrors, therefore we have to use the sign convention in numericals. Numericals में हमें sign convention फिर से लगाना पड़ेगा because दोनों mirrors के लिए same formula है ना. तो we have to use the sign convention for numericals again. All right. Then Yes, sir. okay. तो now can we solve this question? देखो इसका आंसर क्या है. Point object is kept on the principal axis at distance 15 centimeter from pole of the concave mirror of radius of curvature 20. Find image position. Find position of the image. बोले. U is given, F is given indirectly. You have to get the value of V. What's the answer coming?
So minus 30 centimeter. minus 30 means in front of the mirror or behind the mirror? In front of the mirror. Okay, minus 30 is minus means in front of the mirror. जो ऊपर हमने केसेस देखे थे, वन ऑफ देम विल बी देयर बिटवीन सी एंड एफ वाला जो केस था ना, फोर्थ केस जो था उसके साथ मैच कर रहे हैं. एफ क्या लिया आपने? नेगेटिव और पॉजिटिव. Negative. यू एंड एफ बोथ आर नेगेटिव. देखो रियल ऑब्जेक्ट है, कैन यू सी इट? रियल ऑब्जेक्ट है, देयरफॉर यू नेगेटिव. नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा. एंड एफ कॉनकेव है तो इसलिए एफ भी नेगेटिव. मिरर फार्मूला लगाया और एफ एंड यू की वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया तो माइनस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रियल इमेज. क्लियर? Now if I ask you, repeat the same question. If object is at 30 centimeter, So minus 15 centimeter. how can you say? Solve किया कि डायरेक्ट बता रहे हैं? बोलो, सॉल्व किया? Yes, sir. Solved. Okay, minus 15. तो देखो without solving also we can say. Why? Because रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल वर्क्स here. देखो डायग्राम से यहाँ पे देखो, जब u जो है 15 है तो इमेज आपकी 30 पे आई. जब आपने ऑब्जेक्ट को 30 पे रखा तो 15 आएगा आंसर. इंटरचेंज देखते कैसे डायग्राम से समझते इसको. सॉल्व करके देख लो, 15 आएगा. वी पुट द वैल्यू तो v विल बी 15 सेंटीमीटर. ठीक है. तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है, जहां पर इमेज बननी थी वहां पे ऑब्जेक्ट रख दो, तो पहले जहां पर ऑब्जेक्ट था वहां पे इमेज बनेगी. देखो डायग्राम से समझते हैं इसको. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं पोजिशंस तो इमेज भी इंटरचेंज हो रही है ऑब्जेक्ट के साथ, बिकॉज फार्मूला तो वही लगने वाला है. तो आया इसका 15 माइनस 15 आ रहा है. तो Yes. लेट अस गो बैक टू द डायग्राम. देखो ये डायग्राम था फोर्थ केस का. ये वाला था ना. तो जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा बिटवीन सी एंड एफ, 15 था ना, तो कलेंट 10 थी, ये 15 पर था बीच में, तो इमेज यहाँ पर बन गई है ना. तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, चाहे ऐसे रख लो, इमेज यहाँ बन जाएगी. या फिर इसी को ऑब्जेक्ट मान लो तो ये इमेज हो जाएगी उसकी. अगर ये ऑब्जेक्ट लिया तो ये इमेज, और ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है ना. तो रिवर्स हो जाएंगी थिंग्स, बिकॉज फार्मूला रिमेनिंग सेम, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो इंटरचेंज हो जाएंगी पोजिशंस. जहां पर इमेज है वहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहां इमेज बनेगी. तो सच सिचुएशन यू कैन जस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ दीज रिजल्ट्स, है ना. आगे आप इसको यूज कर सकते हैं, इस तरह का आइडिया लगा सकते हैं, है ना. ठीक है.
ये होमवर्क में कर सकते हैं, क्वेश्चन नीचे दिख रहा है आपको। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट। ओके, इसका आंसर ये आएगा 15। ऑलरेडी मैंने लिखा है यहाँ पर। कैन यू सी? Find the position of image if object is at distance equal to the focal length of the mirror, which is 10 centimeter, for following cases. First one is concave mirror, another is convex mirror. जितनी फोकल लेंथ है उतनी डिस्टेंस पे रख दो तो इमेज क्या बनेगी? ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने में। इफ यू कैन रिमेम्बर द रिजल्ट्स। एक तो इजी, एक तो डायरेक्ट ही है, सेकंड वन में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, note down fast. Done? Yes, sir. ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सपोज दैट लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर reflecting surface in figure 9.5 is covered with the opaque, that is non-reflective material. What effect will this leave on the image of an object placed in front of the mirror? ये ऑब्जेक्ट है और ये वाला पार्ट उसको पेंट कर दिया। सपोज हमने यहाँ पर नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगा दिया, ओनली दिस मच इज रिमेनिंग नाउ। हाफ ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, सेकेंड हाफ इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। ये रेज खत्म हो जाएंगी, ये रेज नहीं रहेंगी अभी, ओनली ऊपर से जो रेज आएंगी दे विल रिमेन। तो आंसर क्या होगा? इमेज पूरी बनेगी, ठीक है। दिस हाफ ऑफ द मिरर कैन मेक फुल इमेज बट ब्राइटनेस कम हो जाएगी बिकॉज this part will not be reflecting. You may think that the image will now show only half of the object, but taking the law of reflections to be true for all the points of the remaining part of the mirror, the image will be that of the whole object. However, as the area of the reflecting surface has been reduced, the intensity of image will be low in this case half. इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, ये वाली रेज आएंगी और ये नहीं आएंगी, है ना। ये रेज जो है ब्लॉक हो जाएगी, नीचे वाली रेज नहीं आएंगी, ठीक है। तो दे विल नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, हाफ ऑफ द रेज विल गो, इंटेंसिटी विल बी हाफ। क्लियर? तो मिरर को कट कर दो, कट भी कर दिया तभी भी फुल इमेज है। ऐसा बोल सकते हैं दिस मिरर इज कट एंड इसने पार्ट को कट करके हटा दिया यहाँ से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे यहाँ पे मिरर को हमने ओपेक मटेरियल से कवर कर दिया या होल कर दिया उसमें। इन ऑल द केसेस इमेज विल बी फुल बट इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड। इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द मिरर। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? एरिया ऑफ द मिरर। जितना एरिया आपने कम कर दिया उतने प्रोपोर्शन में इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर? तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड 1 मार्क्स का ही, शॉर्ट एग्जांपल 1 है ना, चैप्टर नंबर 9, शॉर्ट एग्जांपल नंबर 1।
तो एक और क्वेश्चन है, देखो दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला देखो। You see it? What is this question? Let's see. If object is kept at distance 30 centimeter from the convex mirror, plane mirror is placed at distance 10 centimeter from the pole P of the convex mirror. यहाँ पे छूट गया था देखो, from pole P of the convex mirror. Find the focal length of convex mirror if image formed by both mirrors coincide. देखो ऐसे कोई कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट इधर है, मिरर पूरे में नहीं रखा, मिरर हम हाफ में रख सकते हैं। अभी हमने देखा हाफ ऑफ द, अगर कॉन्वेक्स मिरर का हाफ पोर्शन अगर हमने कवर भी कर दिया तो अभी फुल इमेज बन रही, तो मिरर ऐसे रखना है, पूरा नहीं कवर कर देना मिरर, ठीक है। तो मिरर हाफ उसमें रख दो, ब्राइटनेस विल डिक्रीज बट इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ऑलराइट, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के लिए भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी यूज होगी, क्या प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो पॉइंट यूज करके यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी यूज होगी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज होती, उससे आपको भी मिल जाएगा। और एफ इज गिवन है ना, नहीं यू इज गिवन, एफ निकालना है, यू इज गिवन डायरेक्टली, वी इज इनडायरेक्टली गिवन, एफ यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। ये जे स्टूडेंट्स के लिए है ये क्वेश्चन, others can skip it, only J। इसकी पिक ले सकते हैं। जस्ट 1 minute, लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। इज देयर एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेनिंग? ठीक है, लीनियर एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वी कैन डू इट टुमारो, ठीक है। मैग्निफिकेशन का कल पढ़ेंगे, आज इतना कर लीजिए, ठीक है। एंडिंग हियर इटसेल्फ, एंड कर दो। थैंक यू। Yes, sir. ओके।